हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर क्लास 7. So the first question is, what is synonym for apprehensive? Okay, four options are given: confident, anxious, relaxed, cheerful. तो सही आंसर है anxious. Okay, तो नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसे भी आपको पढ़ना है. ठीक है. अब apprehensive means क्या होता है? That is feeling worried or nervous about the future. That is the synonym anxious. Next, what is the synonym for exquisite? Options are ordinary, ugly, extremely beautiful, rough. Okay, तो आपको सही आंसर चुनना है. Correct answer is that is extremely beautiful. What is the synonym for fertile or futile? Useful, productive, pointless, creative. आपको synonym चुनना है. So the correct answer is that is pointless. Okay, yes. What is the synonym for indignant? Happy, annoyed at injustice, grateful, calm. ठीक है, आपको synonym ढूंढना है indignant के लिए. So the correct answer is annoyed at injustice. Okay, yes. What is the synonym for teenage years? Options are weak, careless, persistent, forgetful. Okay, नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुनना है. So the correct answer is that is persistent. What is the synonym for spurious? Options are genuine, real, fake, clear. Synonym हमें चुनना है spurious के लिए. Correct answer is that is fake. Spurious means not genuine. What is an antonym for lucid? Lucid के लिए हमें antonym ढूंढना है. Clear, transparent, confusing, simple. Correct answer is that is confusing. Actually lucid means होता है easy to understand and we have to find the antonym that is confusing. What is the antonym for frugal or frugal? So options are economical, thrifty, extravagant, careful. Okay, तो हमें antonym ढूंढना है frugal के लिए. Correct answer is that is extravagant. Okay, frugal means होता है carefully. ठीक है, यूजिंग मनी केयरफुली, तो उसका हमें एंटोनिम ढूंढना है. दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट, दैट इज स्पेंडिंग अ लॉट्स ऑफ वेस्टफुली. व्हाट इज एन एंटोनिम फॉर लिथार्जिक? सो ऑप्शंस आर sluggish, डल, एनर्जेटिक, टायर्ड. तो हमें एंटोनिम ढूंढना है. करेक्ट आंसर इज दैट इज एनर्जेटिक. लिथार्जिक मीन्स होता है जहाँ पे एनर्जी बहुत कम होती है. ठीक है, तो ऑपोजिट वर्ड आएगा जहाँ पे एनर्जिक. व्हाट इज द एंटोनिम फॉर प्लासिड? काम, स्टिल, टर्बुलेंट, क्वाइट. प्लासिड के लिए एंटोनिम क्या है? So that is turbulent. Okay, placid means होता है calm and peaceful. So यहाँ पे हमें opposite word use करना है, that is turbulent. Turbulent means होता है that is full of disorder or confusion. What is the antonym for affluent? Options are wealthy, prosperous, impoverished, rich. हमें affluent के लिए antonym चाहिए. So correct answer is that is impoverished. ठीक है, yes. तो affluent means होता है that is having a great deal of money and impoverished होता है that is very poor. Which sentences uses a possessive pronoun correctly? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से सेंटेंस में possessive pronoun यूज किया गया है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर चुनना है. करेक्ट आंसर इज that is that book is hers. Each of the students fill in the blank completed the task, choose the correct verb. नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको करेक्ट वर्ब यहाँ पे चूज करना है. हैव, हैज, आर, वेयर. ठीक है, तो आपको सही आंसर चुनना है. करेक्ट आंसर इज दैट इज हैज. Each of the student has completed the task. Because each is always singular, so verb using is has. Which is a collective noun for sheep? sheep के लिए collective noun कौन सा है? A fleet, a pack, a pride, a flock. ठीक है, आपको सही आंसर चुनना है. So the correct answer is that is a fleet. Fleet is a group of sheep. ठीक है, pack is a wolves and pride lions and flock is a bird. That is collective noun. Next, little and few are example of which type of determiner? Options are articles, quantifiers, demonstratives, interrogatives. Okay, ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज क्वांटिफायर्स. ठीक है, सो देखो बच्चों, यहाँ
यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसे आपको पढ़ना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही कवर हो जाने हैं। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई द टेंस शी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय मंडे। वो जो है वो प्रोजेक्ट जो है मंडे को कंप्लीट करने वाली है। तो ऑप्शंस आर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। करेक्ट आंसर इज फ्यूचर परफेक्ट। Which sentence is in the subjunctive mode? ओके, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर चुनना है। So the correct answer is that is I wish she were here. Change to active. The song was sung by the choirs. ओके, तो आपको यहाँ पे एक्टिव वॉइस में करना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सोचना है और सही आंसर देना है। So the correct answer is the choir sang the song. Which sentence uses the past perfect continuous tense? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से सेंटेंस में past perfect continuous tense यूज किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर चुनना है। That is she had been studying for hours. ओके, तो ये आपको देखना है। So he suggested that she fill in the blanks the meeting. Fill in correctly. Options are attends, attended, attend, will attend. He suggested that she attend the meeting. Okay? Yes. What is a gerund in? Swimming is an excellent exercise. इसमें gerund क्या है? Is excellent swimming exercise. ये बहुत easy question है. Answer is swimming. अब gerund क्या होता है? Is a verb form which is end with the ing. Okay? Yes. Hardly is which type of adverb? Hardly जो है वो किस टाइप का adverb है? Adverb of time, adverb of place, adverb of degree, adverb of manner. ठीक है, तो आपको सही आंसर चुनना है। So the correct answer is adverb of degree. ठीक है, hardly is which type of adverb? So it's adverb of degree. Now next, which is correct? She is fill in the blanks of two sister. नीचे दिए गए ऑप्शन में से वो जो है वो टू सिस्टर की द क्लेवरेस्ट, द मोर क्लेवर, द मोस्ट क्लेवर, द क्लेवरेस्ट वन। ओके, तो आपको सही आंसर चुनना है। यस, so the answer is the more clever. She is more clever of two sister. Okay, when we compare exactly to, the comparative form we have to use, not the superlative form. Okay, the movie was fill in the blanks boring that I fell asleep. Choose the correct word. Options are so, such, to, very. ओके, तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। सो द आंसर इज सो। द मूवी वाज सो बोरिंग दैट आई फेल स्लीप। ठीक है, तब सो कब हम यूज करते हैं? बिफोर एडजेक्टिव। ठीक है, यस, और सच बिफोर नाउन। आइडेंटिफाई द एरर। द शी डांसेस मोर ग्रेसफुली देन एनीवन इन द टीम। ओके, यस, तो आपको यहाँ पे एरर यहाँ पे फाइंड करना है। ऑप्शंस आर डांसेस मोर ग्रेसफुली, देन नो एरर, देन एनीवन। आपको सोचना और सही आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से पढ़ना है, वहां से आपको एरर फाइंड करना है। ठीक है, यस, तो सोचिए, तो सही आंसर है दैट इज नो एरर। ये सेंटेंस जो है ये पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द डिसीजन वाज मेड, फिल इन द ब्लैंक्स द एब्सेंस ऑफ द चेयरमैन, ड्यूरिंग, इन, एट, बाय। आपको यहाँ पे सही आंसर चूज करना है। द डिसीजन वाज मेड इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन। ठीक है, प्रीपोजिशन यहाँ पे हमें यूज करना था, तो आपको ये सही आंसर देना है। यस, she is not capable fill in the blank telling a lie. Options are to, for, of, in. ठीक है, वो capable नहीं है, that is she is not capable of telling a lie. झूठ बोलने के लिए वो capable नहीं है। capable of जो होता है वो fixed prepositional adjective phrase होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सही आंसर देना है। fill in, he was elected fill in the blank president of the student council. वो जो है वो स्टूडेंट काउंसिल के लिए प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया है। he was elected president of the student
काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यहाँ पे यूज नहीं होगा, बिकॉज व्हेन यूनिक पोजीशन टाइटल इज यूज आफ्टर, सो दैट टाइम नो आर्टिकल इज यूज, दैट इलेक्टेड, अपॉइंटमेंट मेड। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन दिया है, वो भी आपको पढ़ना है। fill in the blanks. He is rich, he is not happy. Options are because, since, though, so. So the correct answer is though he is rich, he is not happy. भले ही वो रिच हो बट वो हैप्पी नहीं है। अब देखो, आप ग्रामेटिकली तो ठीक है इंग्लिश में, बट कभी कभी आपको आपका सेंस भी वहां पे यूज करना है। विच पेयर आर कंजक्टिव एडवर्ब, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से पेयर में कंजक्टिव एडवर्ब होता है? सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज हाउएवर, देयरफॉर। कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड आई एम स्टडीइंग नाउ। ठीक है, आपको सही आंसर देना है। सो द करेक्ट आंसर इज शी सेड शी वाज स्टडीइंग देन। ठीक है, इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। ठीक है, आई एम स्टडीइंग का हुआ वाज स्टडीइंग, नाउ का हुआ देन। कन्वर्ट टू डायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड इफ शी हैड फिनिश्ड द वर्क। आप 4 ऑप्शंस आर गिवन, आपको सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, दैट इज डायरेक्ट स्पीच में ही आस्क्ड हैव यू फिनिश्ड द वर्क। ठीक है, यस। विच सेंटेंस यूजेस हाइफेंस करेक्टली, नीचे दिए गए ऑप्शन में किसमें हाइफेंस करेक्टली यूज किया गया है? तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। सो द करेक्ट आंसर इज शी इज अ वेल नोन सिंगर। ठीक है, विच इज द करेक्ट यूज ऑफ पैरेंथेसिस, नीचे दिए गए ऑप्शन में कहां पे पैरेंथेसिस करेक्टली यूज किया गया है? सो द आंसर इज द रिपोर्ट which was very long took 3 days to write. ओके, पैरेंथेसिस यहाँ पे आपको यूज करना है। What does ephemeral means, नीचे दिए गए ऑप्शन में से परमानेंट, लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट टाइम, वेरी लार्ज, वेरी कलरफुल। ठीक है, लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट टाइम। ओके, What does verbose means, verbose means क्या होता है? Using too few words, using too many words, speaking clearly, remaining silently। ठीक है, verbose means that is using too many words। The suffix ology means what? Against, full of, the study of, without। ठीक है, आपको सही आंसर चुनना है। So the correct answer is the study of। Ology means the study of। बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लाइफ, साइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ माइंड, जियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ अर्थ, ओलॉजी होता है स्टडी ऑफ, जो वर्ड है ना ओलॉजी, दैट इज। व्हाट डज कोरोबोरेट मींस, नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है, यस। टू कंफर्म और सपोर्ट, द कोरोबोरेट मींस होता है टू कंफर्म और सपोर्ट। चूज द करेक्ट वर्ड। हर फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द पोएम वाज ब्रिलियंट, परफॉर्म, परफॉर्मर, परफॉर्मेंस, परफॉर्मिंग। ठीक है, आपको सही आंसर चुनना है। So the correct answer is performance. Her performance of the poem was brilliant. What does turn over a new leaf means? Change the page, start behaving better, plant a tree, rearrange furniture. ठीक है, turn over a new leaf means that is start behaving better. What does the ball is in the your court means? Play a sport, it is your turn to take action, you have won, you have lost. So the answer is the ball is in your court means it is your turn to take action. All that glitters that is not gold means. Okay, तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन चुनना है। So the correct answer is things are not always as good as they seem. What does burning the bridges means? Burning the bridges means 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही आंसर चुनना है। Setting fire to something, building a strong relationship, doing something that cannot be undone, working very hard. So the correct answer is that is doing something that cannot be done, undone। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको 4 भी ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना है और आपको सही आंसर देना है।
करेक्ट आंसर इज दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसे ऑब्जर्व करना है और सही आंसर देना है। सो करेक्ट स्पेलिंग इज दिस वन। अगेन स्पेलिंग आपको करेक्ट यहाँ पे ढूंढना है, 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसे ऑब्जर्व करना है, करेक्ट आंसर देना है। करेक्ट आंसर इज MISCHIEVOUS। ओके, मिस्चुअस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे ढूंढना है। करेक्ट आंसर इज MILLENNIUM, millennium। The wind whispered through the trees. This is an example of simile, metaphor, personification, alliteration. So the answer is personification. The wind whispered through the tree is an example of personification. Life is a journey. This is an example of simile, metaphor, personification, hyperbole. ठीक है? Life is a journey is an example of metaphor. ठीक है? Next, I have told you a million times is an example of simile, personification, hyperbole, alliteration. Correct answer is hyperbole. ठीक है? Which sentence contain a misplaced modifier? नीचे दिए गए ऑप्शन को आपको ठीक से पढ़ना है और सही आंसर देना है। Which sentence contain a misplaced modifier? Barking loudly, the dog woke the neighborhood. She almost drove her children to school every day. Running quickly, he caught the bus. Tired after the match, the player rested. Correct answer is she almost drove her children to school every day. Okay, यहाँ पे देखो almost should be near what it modifies. यहाँ पे जो explanation दिया है वो आपको पढ़ना है। Provided that you study hard, you will succeed. The underlined clause is. कौन सा clause है? Noun clause, relative clause, adverbial clause of condition, adverbial clause of time. So the answer is adverbial clause of condition. Identify the oppositive in. My friend Aro, a brilliant coder, won the hackathon. ठीक है, तो आपको अपोजिटिव यहाँ पे फाइंड करना है। माई फ्रेंड आरव अ ब्रिलियंट कोडर वोन द हैकेथॉन। करेक्ट आंसर इज अ ब्रिलियंट कोडर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पूरा वीडियो यहाँ पे कवर किया है। तो इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि आपका हर एक टॉपिक जो है वहां पे ठीक से कवर होना चाहिए। और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है आंसर स्लाइड में वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एक साथ आपके जो है यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कवर मतलब कवर हो सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे अच्छे से कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।